Stephen, actually, I'd appreciate that in some way. I have a Okay, record, okay. my own souvenirs. Okay. And we have, so this is me right here. Hello. Okay, Yeah. So yeah, and and you can I see will me. yeah. Yeah, and I will keep my camera to the kids who are here. So we have two camera attachments Okay, right here, and I will translate as you speak. right. Okay. I've tried to make things short so you can do that. And I Yeah, need to learn how to share on this. sure. So ready to begin when you are. Okay, let me try going to the share mode. Share content. Can you see my screen now? Yes, absolutely. We can clearly. Okay, am I in presentation mode now? Yeah. Yes? Yes. Okay. All right, good. I can't tell. I'm kind of just seeing the kids on my other screen. And if you see me looking somewhat sideways from the camera, you realize I'm actually projecting to a much larger screen so that my 75-year-old eyes can detect everything that I'm doing. All right, thank you. I'm Can Glenn you just Orton. give me a second to just maximize Sure. this view? Yeah. Absolutely. Yeah. Just a second. Yes, we can see clearly. It's okay. Right. We can see. Great. Yeah. As long as I can see and hear and everything, that's good. My name Yeah. is Glenn Orton. I'm going to talk about what I do in the astronomy of the atmospheres of the outer planets. Okay. नमस्ते कर रहे हैं आपको वैज्ञानिक और उनका नाम है ग्लेन ऑर्टन. क्या नाम है? वेरी गुड. और वो एक सीनियर साइंटिस्ट हैं जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में नासा के. नासा जानते हैं ना? वेरी ग्रेट. यस. Okay, what I'm going to do in this talk is tell you what I'm interested in, just planetary atmospheres from visible and infrared observations. What are my tools using ground-based telescopes and spacecraft? I'll talk about the Juno mission and the role of citizen science astronomers. And at the very end, a slice of the crazy life of my astronomy life, a peek at my week that started 2 days ago. Okay. So ये आप लोगों से बताएंगे जो चीजें इनकी दिलचस्पी की हैं. प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर्स मतलब दूसरे ग्रहों में कौन से वायुमंडल है. ठीक है. और उसमें हम विजिबल जो हम देख सकते हैं वो, और इंफ्रारेड जो हम देख नहीं सकते वो, उन दोनों की बात कर रहे हैं. उनके लिए कौन कौन से उपकरणों का उपयोग करते हैं, ये कि ग्राउंड बेस्ड जो अपन टेलीस्कोप जैसे इस्तेमाल करते हैं, और स्पेसक्राफ्ट जो बाहर जाते हैं. ठीक है. और जूनो मिशन और उसमें सिटीजन साइंस की क्या भूमिका है. जूनो मिशन जुपिटर का जो मिशन है, और उसमें सिटीजन साइंस की क्या भूमिका है. और पिछले हफ्ते का जो पिछले 2-3 दिन का इनका जो रूटीन रहता है, इनकी जिंदगी कैसी रहती है, उसमें भी हम स्नीक पीक करेंगे कि कैसा एक लाइफ रहती है एक एस्ट्रोनॉमर की. ओके. Okay. I work in infrared astronomy. When you see light with your eye, you see light in a very narrow part of the spectrum of light, which consists of waves. The waves that I'm using most of the time are more red than your eye can see. Visible light goes from 0.4 to 0.6 microns, a very small unit of measure. Infrared light goes to much longer wavelengths. ओके. सो जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, रोशनी को देखते हैं, तो हम केवल विजिबल लाइट को देख रहे होते हैं. ठीक है. और अगर हम केवल विजिबल लाइट को देख रहे होते हैं, तो फिर हम
वो हिस्सा नहीं देख पाते स्पेक्ट्रम का जो कि अच्छे से हमारी आई की रेंज के बाहर है, चाहे इंफ्रारेड हो गया चाहे अल्ट्रावायलेट हो गया। जबकि रोशनी बहुत सारे पैमानों में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट करती है, पर बहुत छोटा हिस्सा हम देख पाते हैं। ठीक है, तो ये काम करते हैं इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी में। इंफ्रारेड, जिससे तापमान गर्म होता है। आप लोगों ने देखा है कभी वैसी फोटो जिसमें लाल ज्यादा गर्म होता है, पीला थोड़ा ठंडा, नीला और ठंडा, देखा है? तो जैसे सांप की भी ऐसी दृष्टि होती है, तो वैसे वो वाले जो स्पेक्ट्रम जो हम देख नहीं पाते, वो वाली एस्ट्रोनॉमी में ये काम करते हैं। ग्रेट। Okay. That infrared radiation detects heat. You can see a very hot bottom of the space shuttle as it's slowing down, having gone through the Earth's atmosphere. So, ये एक फोटो है स्पेस शटल की, धीरे धीरे करके जब पृथ्वी के वायुमंडल पे आ रही हो, तो धीरे धीरे करके कौन सा हिस्सा गर्म है और कौन सा ठंडा है। आपके हिसाब से कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा है? ओके, सो आई ऑल्सो आस्क देम राइट नाउ which portion do they think is hotter and which is cooler. So they're saying that the core, the yellow reddish part is much hotter than the blue violet part. Perfect. बिल्कुल सही, perfect. And you also can see body heat. ओ, ये देखो, आप क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, बताओ, कौन बताएगा कि क्या दिख रहा है? No, I tell you, I did not pose for this picture myself. ये बोल रहे हैं कि इन्होंने नहीं ये फोटो के लिए खुद के लिए पोज किया, ठीक है, ये किसी और की है। ओके। Or you can get satellite images of the Earth and the heat that is coming from the atmosphere, the oceans, and the land. वैसे ही आप बहुत सारी इमेजेस देख सकते हो, जो आप पृथ्वी की भी देख सकते हो, सैटेलाइट की भी देख सकते हो, और कई सारी चीजों की देख सकते हो। समझ में आया? आया? इफ यू आर नॉट फॉलोइंग, लेट मी नो। Okay? Okay. All right. On planets, I did my first work with Pioneer 10 and 11 to Jupiter and Saturn in 1973 and 1974 with the infrared radiometer. तो इन्होंने जो सैटेलाइट भेजी थी 1973 और 1974 में, उसमें जुपिटर और सैटर्न, यानी कि बृहस्पति और, जोर से, वेरी गुड, बृहस्पति और शनि पे इन्होंने इंफ्रारेड रेडियोमीटर से उसकी तस्वीरें ली। ठीक है, उसके तापमानों की, उसके कई चीजों की। ग्रेट। Or the Galileo mission to Jupiter from 1996 to 2003 with two instruments, a near-infrared spectrometer and the photopolarimeter radiometer. गैलीलियो जो जुपिटर पे गया था 1996 से 2003 में, आपको पता है ना कि समय लगता है। क्यों समय लगता है? बहुत दूर है। वेरी गुड, क्योंकि बहुत दूर है इसलिए समय लगता है। और इन्होंने दो उपकरण इस्तेमाल कर रहे थे, एक तो नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा फोटोपोलरिमीटर। आप लोग जानना चाहते हैं ये क्या है? Actually, the kids don't know what these instruments are. Will that be covered later on, or can you answer that now, or should we leave that for a question answer session? I'll answer that now. They both look at different parts of the spectrum. They're both infrared. These are two instruments I dealt with. The near infrared is just a little longer than your eye can see, and the radiometer part of the photopolarimeter radiometer is much longer wavelengths. Okay. Okay. So ये अलग अलग वेवलेंथ को देखने वाले अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, यूं मान। ठीक है, जैसे कि मेरी आंख अलग देख रही है, सांप की आंख अलग देख रही है ना? तो वैसे अलग अलग वेवलेंथ के लिए। ठीक है, yeah. I'll move ahead when you let me know. Give me a cue. Yeah. Also, in the infrared, like the radiometer on Galileo, we lose the Spitzer Infrared Space Telescope.
It's in solar orbit near the Earth. I use the infrared spectrometer. ओके सो जैसे पृथ्वी ऐसे चक्कर मार रही है ना सूरज के उसकी ऑर्बिट में, वैसे ही एक और टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप, स्पिट्जर इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप इन्होंने डाला है सूरज के ही ऑर्बिट पे, जैसे पृथ्वी वाली ऑर्बिट में ही अंदर इन्होंने साथ में ये वाला टेलीस्कोप डाला है, जो अगेन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर देखता है, इंफ्रारेड लाइट देखता है। ठीक है, अभी तक आपको इंफ्रारेड लाइट का मतलब तो समझ में आ रहा है ना? यस। Okay. Cassini, which had many instruments operating in orbit around Saturn from 2005 to 2017, 2 more infrared instruments. It's probably not useful to say exactly what these were. The near-infrared spectrometer and longer wavelengths, the composite infrared spectrometer. It's not important to memorize the names of these, but just to know that I've worked on all of those. ओके सो वो बोल रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि सारे नाम याद करो या कुछ करो, थोड़े थोड़े फंक्शन समझ लो बस कि ये क्या करते हैं। तो कैसिनी नाम का स्पेसक्राफ्ट 2005 में सैटर्न पे भेजा था, 2005 से 2017 का मिशन था, और इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट थे, कंपोजिट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा विजिबल नियर इंफ्रारेड मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, VIMS। तो विजिबल तो अपन जानते हैं कौन सी है, जो अपन देख सकते हैं, वेरी गुड, और नियर इंफ्रारेड वही जो तापमान बताता है लेकिन अपन देख नहीं सकते। या Okay. Then really, really long wavelengths, almost radio waves, the Herschel Space Observatory in solar orbit near the Earth from 2009 to 2013. This was launched by the European Space Agency, not NASA. ओके तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक और लॉन्च करा था जिसका नाम था हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी, और ये भी पृथ्वी के पास ऑर्बिट में है, सूरज की ही। 2009 में लॉन्च हुआ था और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था। और ये फार इंफ्रारेड, वो भी इंफ्रारेड में भी देखो अलग अलग हिस्से बन जाते हैं, हम जो देख पाते हैं उसके स्पेक्ट्रम में भी अलग अलग हिस्से बन जाते हैं। तो उसमें एक और हिस्से को देखने के लिए, फार इंफ्रारेड को देखने के लिए हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करा। अब आप लोग देख रहे हो कितने टेलीस्कोप हम वायुमंडल से बाहर फेंक भेजते हैं, क्योंकि वायुमंडल बहुत क्या करता है, क्या करता है वायुमंडल, क्या करता है, हमें देखने देता है साफ या उतना साफ नहीं देखने देता? उतना साफ नहीं देखने देता। वेरी गुड, या Okay. And the Hubble Space Telescope, it's been 33 years in Earth orbit, looking at ultraviolet and visible wavelengths. हबल स्पेस टेलीस्कोप सन 1990 से लेके अभी तक ऑर्बिट में है पृथ्वी की। हम कई बार देखते हैं, कभी देखा है किसी ने रात को एक थोड़ा सा चमकीला सा जो बस धीरे 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 जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, देखा है? तो हबल स्पेस टेलीस्कोप और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये 2 अभी हमें दिखते हैं बहुत आराम से रात को। तो ये अल्ट्रावायलेट वो वाली वेवलेंथ है, जैसे इंफ्रारेड विजिबल के नीचे, अल्ट्रावायलेट विजिबल के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ देख पा रहा है वो अल्ट्रावायलेट, और कौन सी क्या लिखा है, विजिबल, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप देख पा रहा है। ग्रेट। Okay. And most recently, the James Webb Space Telescope in solar orbit near the Earth from last year until now, all infrared wavelengths. एक और टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पिछले साल लॉन्च हुआ था। इस अपन को पता है ना कि टेलीस्कोप जितना बड़ा होता है उतनी ज्यादा वो प्रकाश को आप माप सकता है अपने अंदर ग्रहण करके, मतलब अपन उसमें उतनी साफ तस्वीर देख सकते हैं, उतना दूर देख सकते हैं। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत बड़ा है। हबल के साथ अभी 2022 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी भेजा है, जो बहुत सारी दूर दूर की हमें गैलेक्सीज के बारे में बता रहा है। तो ये ज्यादातर इंफ्रारेड वेवलेंथ देखता है। कौन सी कौन सी? वेरी गुड, ओके, या
and the Juno mission to Jupiter, which has been orbiting from 2016 to 2025, we hope. The Juno cam visible, a near-infrared with the Jupiter infrared auroral mapper, the microwave radiometer, and that should not say VIMS, that should say MWR, I'm sorry, and Earth-based supporting observations, which I'll talk about more directly in a bit. ओके सो जूनो मिशन में जो जूनो कैम है, जो वहां पे सैटेलाइट में कैमरा लगा है, वो विजिबल देखता है जैसे हम देख पाते हैं. जुपिटर इंफ्रारेड ऑरोरल मैपर वो इंफ्रारेड के पास वाली देखता है. माइक्रोवेव रेडियोमीटर है जो माइक्रोवेव देखते हैं. माइक्रोवेव से गर्म होता है ना खाना, वो वेवलेंथ भी होती है स्पेस में, ठीक है, तो उनमें भी देखा जा सकता है. और अर्थ बेस्ड सपोर्टिंग ऑब्जर्वेशन, मतलब जैसे हमारा एक मान लो वात्सल्य स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, वो हमारा एक स्टेशन बना दिया कि जूनो को ऑब्जर्व, ठीक है, तो अर्थ के भी बेस कई सारे सपोर्टिंग ऑब्जर्वेशन, कई सारी रीडिंग कई एंगल से ली जाती है. ये बताया था ना? ओके ग्रेट. These are the telescopes I use from the ground. This is the summit of Mauna Kea, Hawaii. Yes, no palm trees, but this is very high. Let's see, what would that be in kilometers? It's 14,000 feet. So that's about 3.5 kilometers. Yes. Around. It's about 63% of sea level oxygen, so I have to be very careful. Okay. Yeah. Go ahead. Okay. So ये इनकी फोटो है हवाई एक जगह यूएसए में, जानते हो, सुना है नाम हवाई? वैसे तो वहां पे वो जैसे इंडिया का गोवा है ना, वैसी जगह, लेकिन वहां पे भी पहाड़ है ऊपर. तो 14,000 फीट की हाइट पे यहाँ पे WM केक टेलीस्कोप्स है जिनके 10 मीटर डायमीटर है. इंफ्रारेड के ये सबसे बड़े टेलीस्कोप हैं पूरी दुनिया में. 10 मीटर का डायमीटर, सोचो कितना बड़ा होगा 10 मीटर का डायमीटर, है ना? अगर 10 मीटर का डायमीटर हो तो आप सोचो क्या क्या नहीं देख सकते हैं. हमारा तो 16 इंच का डायमीटर है, 10 मीटर, समझ रहे हो? ये साइंस सेंटर से भी बड़ा, ठीक है. तो वो है वहां पे. और जैसे इन्होंने बताया ना कि अर्थ बेस्ड ऑब्जर्वेशन स्टेशंस हैं, तो ऐसे ही कई ऑब्जर्वेशन स्टेशंस होते हैं. एक जापान का भी टेलीस्कोप है 8.25 मीटर के डायमीटर का, और नासा का एक और है 3 मीटर डायमीटर का वहां पे ऑब्जर्वेशन का. ओके, ये हवाई में है. नेक्स्ट. Here, also from the very large telescope, the European Southern Observatory. This is in Chile. And there are not just one, but 4 8-meter telescopes. So, यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी चिली दक्षिण अमेरिका में. नदर्न अमेरिका है, याद है अपना ग्लोब है, ग्लोब में देवाशीष एक बार ग्लोब ले आओ. For context, I just need to geographically tell them where Chile is. Just a second. Yeah. So, ये दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे चिली है, ठीक है. और ये यहाँ पे वेरी लार्ज टेलीस्कोप है VLT, और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने एस्टेब्लिश करा है. तो आप समझो जैसे कि नासा कुछ करता है, इसरो कुछ करता है, वैसे ही यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी एक अलग ऑब्जर्वेशन स्टेशन, एक अलग स्पेस एजेंसी. ओके, या Okay. This is the Jupiter everyone remembers and knows in the visible, but this is my Jupiter. Every time you see at 5 microns, you see something that's very hot. It's because the temperature is hot, and we're seeing down in the atmosphere. As you go down in the atmosphere, it gets warmer, just like the Earth. So we can tell that these clouds are very deep. ओके. सो ये जो बोल रहे हैं, अपन ने जो जुपिटर की फोटो देखी है वो तो सबने देखी है, जो इन्होंने पहले फोटो दिखाई. लेकिन ये है इंफ्रारेड में जुपिटर की फोटो, यानी कि ये उसके अलग अलग तापमानों का नक्शा है पूरा. और जैसे ये जो हिस्सा है छोटा सा, ये बहुत गर्म है. ये जो गहरे रंग का है वो ठंडा है, लेकिन जो ये छोटा हिस्सा है बहुत गर्म है. और ये जैसे कि पृथ्वी में आप वायुमंडल में ऊपर जाते हो तो ठंडा होता जाता है ना, पहाड़ों के ऊपर ठंडा है, यहाँ पे गर्म है.
तो वैसे ही जुपिटर में भी एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाओगे तो ठंडा है, जैसे जैसे पास आते जाओगे, अंदर जाते जाओगे, और क्या होगा? गर्म होगा. वेरी गुड. Okay. ग्रेट. And I get Jupiter's temperatures. Where we live in the Earth is the troposphere, where winds are important. Higher in the atmosphere, where jet planes travel, is where heating and sunlight is important. And we see things in both the troposphere and the stratosphere of Jupiter. They both have waves. And to us, the great red spot is the great cold spot. ओके. सो ये जो जुपिटर के तापमान है, ये वाले जो इसका नक्शा है, ये ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर दो अलग अलग रीजन है. अब जैसे कि पृथ्वी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रोपोस्फियर होता है थोड़ा सा ही जस्ट ऊपर, मतलब 1000-2000 किलोमीटर, 5000 मीटर, ये ट्रोपोस्फियर में आता है. स्ट्रेटोस्फियर उससे भी ज्यादा ऊपर से शुरू होता है. फॉर कॉन्टेक्स्ट, हाउ हाई इज द स्ट्रेटोस्फियर? आई मीन, वेयर इज द डिवाइडिंग पॉइंट in terms of Jupiter? For Jupiter, it's over about a tenth of a bar of atmosphere. It's like Okay. 40 kilometers above the place where there's one bar. There's no surface, so there's no. Okay. हमारे लिए तो क्या है कि जमीन पे ज्यादा प्रेशर होता है वायु का, धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं और प्रेशर कम होता जाता है. जुपिटर में भी यही होता है, लेकिन जुपिटर में सतह नहीं है, और हमारे पृथ्वी पे यहाँ पे एक बार प्रेशर है. जुपिटर पे तो सतह पे भी इससे काफी मतलब थोड़ा सा कम है, हालांकि अंदर और भी ज्यादा होता जाता है, लेकिन 40 किलोमीटर ऊपर 1/10 of a bar. That's what you said? Yes. Okay. जब 1/10वां बार प्रेशर हो जाता है, वहां से जुपिटर का स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होता है. तो जो ट्रोपोस्फियर है उसमें जुपिटर की खुद की हवाएं बहुत अहम भूमिका प्ले करती हैं उसके तापमान के लिए. जैसे कि यहाँ पे ठंडी हवा चली तो ठंडा आ जाती है, गर्म हवा चलती है, वैसे है ना. लेकिन उसके ऊपर हवाओं का उतना रोल नहीं होता. होता है तो सूरज की किरणों का. वेरी गुड. तो स्ट्रेटोस्फीयर को सूरज का तापमान, सूरज बदलता है, और ट्रोपोस्फियर का ज्यादातर क्या करते हैं? हवाएं. वेरी गुड. ग्रेट. Sometimes I say it's where the Jovians are flying their jet planes in the stratosphere. It's just like in the Earth. But Yeah. for Saturn, this is what people know. But we've determined that, unlike Jupiter, which has 5-micron hot spots, Saturn has 5-micron cold spots. So they're thicker clouds. ओके. सो ये नासा के इंफ्रारेड टेलीस्कोप ने सैटर्न को की जो इंफ्रारेड इमेज दी है, ये इसमें आप देख सकते हो कि कुछ जगह पे है ना, ये ब्लैक ब्लैक डॉट है, दिख रहे हैं? तो ये हॉट स्पॉट नहीं, ये कोल्ड स्पॉट है. ठीक है. जैसे कि जुपिटर में अपन ने ऑरेंज और येलो ज्यादा देखा था ना, वो तो गर्म ज्यादा थे. ये उल्टा है. क्या मतलब, क्या है ये? ठंडे ज्यादा है. वेरी गुड. तो थोड़े ठंडे स्पॉट्स हैं. कोई पूछना नहीं चाहेगा कि ये कलर में क्यों नहीं है? हैं? पूछना नहीं चाहते? नहीं. So there's a question, why aren't these in color? Oh, it's my choice. क्योंकि उनकी मर्जी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लेना चाहते थे. The red is just to make it, to remind me that this is heat coming up. I just didn't color these in the same way. Okay. Does it help with the contrast, black and white image? Oh, it could. I mean, this might be looking better. Okay. Here we're looking at the troposphere of Saturn with things we never expected. The rings are warm. The rings are rotating this way. So you can see that as I went behind Saturn, they got cold and they're warming up again. There are waves in Saturn here. And there's this very hot South Pole formed from forced downwelling air. Okay. So Saturn पे लोगों ने जो सोचा था, जैसे कि हमारे
भारत गर्म है और आप रशिया जाते जाओगे तो ठंडा होता है ना। तो पोल्स के पास क्या होता है, गर्म या ठंडा। और यहाँ भूमध्य रेखा के पास, वेरी गुड। सो सैटर्न पे एकदम उल्टा देखा हम लोगों ने कि भूमध्य रेखा पे तो ठंडक है और ये जो दक्षिण पोल है वहां बहुत गर्म है। ऐसा क्यों है, कोई पूछना चाहेगा? So why is it that the southern pole is hotter? Children are asking. Part of that is seasonal. It's the warm southern hemisphere at that point in summer. But Okay. this particular thing is hot all the time. And it's because air is being pushed down into that area and being squeezed, and so it warms up. To you and me, it's adiabatic heating, but Okay, yeah. Okay, कोई बात नहीं. And we're not going to talk about adiabatic heating, but yeah. I know it's So, warm in the summer. yeah. So ये क्या होता है कि बीच वाले हिस्से गर्मियों में गर्म तो होते हैं, लेकिन सैटर्न के अंदर की जो हवा है, जो उसका वायुमंडल है, उसमें गर्म हवा दक्षिण की तरफ धकेल दी जाती है उसके अलग अलग दबावों के कारण. तो जहां पे गर्म हवा जाएगी वहां तापमान क्या होगा, गर्म. ऑलराइट, इट्स इंटरेस्टिंग. Yeah, this was a big revelation for us when we trained the Keck telescope on Saturn. या What I ये don't बोले like about what I don't like क्या, about my job. A question? sorry. No, I was just expressing the surprise. I wanted to convey that also in Hindi. Yes. So, ये लोग भी थोड़ा चकित थे कि यार ये क्या है, क्योंकि सब जगह तो जहाँ पे धूप ज्यादा पड़ रही है वहां पे गर्म है, लेकिन शनि में थोड़ा मामला अलग है. ठीक है, Yeah, it was the telescope operator at Keck when we told to point at Saturn in this part that who just said, just had a real intake of her breath and said, "That's beautiful," which is not something I usually hear from the staff in the observatory. ओके. सो जब वो जो टेलीस्कोप ऑपरेट कर रहा था, जो बैठा था, उसने जब ये देखा तो वो ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन ऐसी चित्र को देख के अरे यार ये तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत बात है. मतलब जो नॉर्मली चीज अपन देख नहीं पाते, उससे नई चीज देख के अच्छा लगेगा ना. जैसे कि आज हम सब वोट दे रहे हैं, अगली सरकार कुछ अच्छा काम करे तो अच्छा लगेगा ना, बोलेंगे रहेगा, चकित रह गए हम. ठीक है वैसे. ग्रेट. Right. Here's what I don't like about my job: bad weather. This इनको is अपने Hawaii. काम, इनको अपने काम के बारे में क्या नहीं पसंद, मौसम, क्या कड़ाके वाली सर्दी तूफान, उस सब में जाना पड़ता है. ओके. Okay. What I do like was working with people to discover things, and it's what I wanted to do since I was 7 years old. Every day I find new things. I discover new things. वाह. अपने काम के बारे में जो पसंद है, बहुत सारे लोगों के साथ मिलके काम करना और नई चीजों की खोज करना, ये वो करना चाहते थे 7 साल की उम्र से. आई हैव वांटेड टू डू सिंस आई वाज 7. 7 साल की उम्र से करना चाहते थे, और हर रोज वो कोई ना कोई नई नई चीज को देख रहे हैं. ब्रह्मांड की कोई ना कोई नई खोज हो रही है. एक्साइटिंग है. Mhm. ग्रेट. एक्साइटमेंट पे हाँ नहीं आया. गुड. Okay. ओके. Including working with students, teaching them how to do astronomical research on planetary atmospheres. This is in my old office, in my new office, and during COVID, we were all on Zoom. We can't see you during COVID. You don't. Oh, there you are at the corner. Way, still in my room. Yes. ओके. सो इसमें ये बहुत पसंद है उनको कि बहुत सारे स्टूडेंट उनके साथ काम करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी. कल को आप लोग भी अगर जाओगे, क्या पता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो तो इनके साथ काम करने को मिले. बहुत सारे स्टूडेंट इनके साथ बहुत सारी खोजबीनों में काम करते हैं. ठीक है, ये स्टूडेंट्स के साथ उनकी तस्वीरें हैं. और ये कोविड के टाइम पे जब मिल नहीं पाए थे तो ये स्काइप पे भी बहुत सारे काम करते थे, मतलब वीडियो कॉल पे. या नेक्स्ट. Okay. And what I like working with many citizen science astronomers to help the Juno mission.
Juno observed a very small part of Jupiter each orbit. It's only once every 38 to 53 days for each orbit, but this community provides observations for 24/7. वाह, अब Yes. देखो ये कितनी अहम बात बोल रहे हैं, कितनी अहम बात बोल रहे हैं और कितना खुश होके बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जूनो जो जुपिटर पे भेजा है इन्होंने सैटेलाइट से, जो उसका चक्कर लगा रहा है, वो एक बार 38 से 53 दिन में एक बार ऑब्जर्वेशन भेज पाती है। भले ही पास है लेकिन इतनी कम भेज पाती है। लेकिन ये जो सिटीजन साइंटिस्ट है, जो कि आप लोग काम सीख रहे हो, ये दिख रहे हैं आपको इतने सारे लोग, ये वो नहीं है जो डिग्री के साथ बैठे हैं या यूनिवर्सिटी को कोर्स कर रहे हैं, ये सिटीजन साइंटिस्ट है। ये अपने अपने टेलीस्कोप के साथ जुपिटर की ऑब्जर्वेशन 24x7 यानी कि हमेशा भेजते हैं, हमेशा भेजते हैं। तो इनको बहुत सारा डेटा मिलता है जिसपे ये काम कर सकते हैं। समझ में आया सिटीजन साइंस की भूमिका? वेरी गुड। Oh, okay. Now, Juno mission. Our objectives are to determine composition and decide among different theories of its origin, to understand its interior structure and dynamics, to map variations in the atmospheric properties on very deep atmosphere for the first time, and to look at the three-dimensional structure of Jupiter's polar magnetosphere and aurora. Okay. It's a bit high level. Okay. So, Juno मिशन में देखो क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, क्या क्या उद्देश्य थे। सबसे पहले तो ओरिजिन, मतलब ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में जितना भी हम जानकारी जान पाते हैं वो, तो वो केवल जुपिटर से नहीं, वो तो सब चीजों से संबंधित है। ठीक है। फिर जुपिटर की, सॉरी आई मिसअंडरस्टूड, जस्ट अ सेकंड। सो इट्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ जुपिटर, राइट? Yes. ओके, सॉरी, नहीं मैं गलत समझा। ब्रह्मांड की नहीं, ये जुपिटर के ओरिजिन की बात करने कि वो बना कैसे था, सबसे पहले सोलर सिस्टम। ठीक है। और सोचें कि क्या क्या जो थ्योरी है इसके ओरिजिन की, उसमें कौन कौन सी चीज सही है, शुरुआत में कैसे बना होगा, अलग अलग जो चट्टाने, मिट्टी, डस्ट साथ में मिलके कैसे बनी होगी। ठीक है बच्चों, प्लीज ध्यान दो, आप लोगों की रिकॉर्डिंग सब देखी जाएगी। हाँ, फिर इंटीरियर, जुपिटर के अंदर, उसके अंदर क्या क्या है चीजें। ओके, अंदर ठंडा है, गर्म है, कैसा उसका कोर है। फिर उसका वायुमंडल, कि उसके वायुमंडल कौन कौन सी गैसों से बना है, कैसा है, कितना चलता है। मैग्नेटोस्फीयर, जुपिटर की भी चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय बल, जो चुंबकीय फील्ड है, उसके बारे में अध्ययन करना। यस। Okay. Jupiter's orbiting in very elliptical orbits. Let's let it go very, very, very close to Jupiter and not spend much time during its very intense radiation environment. We got very, very close to the clouds, more than any other spacecraft before us. Okay. So, Juno, जैसे कि, can you play the animation again? Take it. Can you play the animation again? I'm trying to do it by hand. I'm trying. Apparently not. Hang on. Okay. आप लोगों ने एनिमेशन देखी जो अभी जारी थी? तो या देखो, थैंक यू। ये जो गोल घूम रहा है, ये जूनो सैटेलाइट है जुपिटर के पास। तो आप देख रहे हो कि एक ही पॉइंट पे वो जुपिटर के एकदम पास आता है और फिर दूर जाए। तो ये क्यों है, एक तो वो आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन वो थोड़े समय के लिए ही अपनी ऑब्जर्वेशन पास वाली भेज पाता है। अभी मैंने बताया ना 38 से 53 दिन। पूछना चाहते हो क्यों है ऐसा? So why only this? They're asking why can't it be in a stable orbit at a stable distance? It can be very close to Jupiter all the time, but it would die of radiation very fast. Okay. So जब ये जुपिटर के बहुत पास हो सकता है, ये गोल गोल घूम सकता है, लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा रेडिएशन से। लेकिन कौन सा रेडिएशन, सूरज का या जुपिटर का? पूछे। So
What radiation? Jupiter's reflected radiation or the sun's radiation? No, this is radiation from high intense magnetic field and charged particles, sort of like the interior of a nuclear reactor. Oh, Yeah, very so heavy. We spend a okay, little time as we can. okay. And a question from me. Yeah, The scale which we are looking at, is that how far the magnetic field intensity goes, or it just, probably I about here. mean, Yeah, there's a oh, magnetosphere that comes out here, but then there's a trailing. We see some of the solar wind out at the long orbit, and so oh, we're as this orbit moves around, we are sensing different parts of that magnetic field. okay, great. So I'll just explain this. Sure. So, तो जुपिटर का विद्युत चुंबकीय बल बहुत ज्यादा है और बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं उसके आसपास. तो अगर वो उसके पास ज्यादा देर रहेगा तो क्या होगा? खराब हो जाएगा, जल्दी से उसकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स और जो मैग्नेटिक फोर्स है ये ऐसा है कि आप परमाणु रिएक्टर के अंदर खड़े हो जाओ. समझ में आया? न्यूक्लियर रिएक्टर जानते हैं ना, न्यूक्लियर पावर होती है. वैसे ही परमाणु रिएक्टर के अगर आप अंदर खड़े हो जाओ तो उतनी ऊर्जा आपको चारों तरफ से अगर टकरा रही है तो ये जल्दी से मिशन फेल हो जाएगा. इसलिए उसकी ऑर्बिट इस तरीके से बना रखी है. और जहां मेरा अभी माउस है ना, वहां तक इसका विद्युत चुंबकीय बल जाता है लगभग इतना दूर तक. प्लैनेट छोटा सा है लेकिन बल कितना दूर तक जा रहा है. ओके. Okay. So, I have one question. So, this is the orbit of the satellite Juno around Jupiter. I didn't understand all of it. Go ahead. Tell me. Glenn sir, I guess we can keep a small question answer session after the session, right? Sure. So Dory, thank you for the question. Just write it in the chat so you don't forget, and we'll have a look at all the questions. Okay. Okay. Thanks. I'm going to show JunoCam, that is a visible camera. We put together a continuous sequence of images that shows you Jupiter as if we were on the spacecraft, and it will show you how close we get to the clouds. Okay. So ये 12वें, जब वो 12वें चक्कर लगाया था तो क्लोज अप्रोच को पेरीजोव बोलते हैं. It's pronounced पेरीजोव. Yes. Yes. Okay. Instead of And a periapsis, we make it relevant to Jupiter by calling it a perijove. ओके. सो ये कॉम्पोजिट इमेज है, मतलब बहुत सारी इमेजेस को साथ में इकट्ठा करके स्टैक करके एक साथ बनाने की जो फंडा होता है, अपन को पता है ना, स्टैक करते हैं फोटोज को. तो ये एक वीडियो में बनाया गया था. आर यू गोइंग टू शो अस द वीडियो? Yes. I want to make sure you got this before I started, so you will get a chance to rest your voice. देखो 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 सब देखो. And I put some medieval choir music to the background. ये जुपिटर ही है. Really close. There's a great red spot. There's a south pole. फिर से देखना है ये कैसे सैटेलाइट वहां से गई और पास से होते होते गई. So actually we have a demand to seeing it again, and if you can just wait a second, I'll just increase the brightness of the projector. Okay. Yeah. I'll have to Just go a back. second. Uh-huh. Just a second. Yep.
Okay, please play it. Okay. Coming down from the north. ये सैटेलाइट में है, अपन बैठे हैं सैटेलाइट में और धीरे धीरे करके जा रहे हैं उसके पास से. These are storms. ये सारे तूफान है जो गोल गोल दिख रहे हैं ना. And chaotic regions. Another storm. पूछ सकते हो कि आप ये बीच बीच में ग्रीन क्यों आ रहा है? वीडियो की प्रॉब्लम है या फिर वहां से कुछ प्रॉब्लम है? More storms. Sudden cyclones around the South Pole. So this was very fascinating actually. Yes. Yeah, and it's amazing to see how close the orbiter Yes. goes. You bet. It's just the real time is maybe an hour and a half or 2 hours to get those. So ये Out of- 2 out of- घंटे 2 घंटे लगे सब पूरा जो वीडियो पे अपन ने देखा उससे 2 घंटे लगे यूं करने में. ठीक है, हमने फास्ट फॉरवर्ड किया था. Yeah. Okay, I'll move on. Now, the contributions of amateur astronomers here is not for perijove 12, but perijove 13, the next orbit. Here's a collection of what Juno could get. When you get very close, you get high resolution, but not very much of the planet till you get to the south and you're moving a long way away. So each image picks up a small part of the atmosphere. For the ground-based astronomy, we get the context of the bigger part of the atmosphere to see whether the small features are part of a bigger phenomenon. And between each incident that we get close, we need to know how much the atmosphere changed in between each one. Go ahead. Okay. So ये जो बता रहे हैं ये अलग अलग एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स यानी कि ये जो सिटीजन साइंस की हम बात कर रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन है. जूनो के कई सारे क्लोजअप व्यू है ना जो वो लेता है, जूनो लेता है फोटोज और हमें उस फोटो की जैसे कि मान लो आप अपन आसमान में देखते हैं ना कि अपन टेलीस्कोप को कैसे देखते हैं, पहले फाइंडरस्कोप को देखते हैं और फिर आईपीस में देखते हैं ना. तो अगर फाइंडरस्कोप नहीं हो तो अपन ढूंढ नहीं पाएंगे ना कि आईपीस में, और मान लो कोई चीज आईपीस में है पहले से उसको हम देख रहे हैं लेकिन हमें कोई नई चीज देख रहे हैं और अब मैं आपसे पूछूं कि वो ओरायन कॉन्स्टेलेशन में है या कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन में, कौन से कॉन्स्टेलेशन में, तो आप ऐसे थोड़ी बता सकते हो, आपको पूरा बड़ा चित्र भी देखना पड़ेगा. अब बड़ा चित्र कौन प्रोवाइड करता है? वो होते हैं सिटीजन साइंटिस्ट. जूनो कैम ने तो छोटे छोटे ले लिए फोटो, लेकिन उस समय बृहस्पति की स्थिति कौन सी थी? सेम टाइम अगर अपन ने देखे कि शाम के 6:30 बजे अगर जूनो कैम ने एक फोटो ली छोटे से हिस्से की जुपिटर के, और वो कौन सा छोटा हिस्सा है, कहां पे है, उसके लिए हमें ऊपर जूम आउट करना पड़ेगा ना कि हम कौन से हिस्से में देख रहे हैं जुपिटर के. तो वो जुपिटर की उस समय कौन सी स्थिति थी वो फोटो अपन ले सकते हैं यहां से, समझ रहे हो? तो फिर दोनों फोटो को साथ में देख के अपन बता सकते हैं कि अच्छा ये जुपिटर के इस हिस्से में ये एक नया तूफान है या ये हवाएं इस तरीके से चल रही हैं. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. To get the context, we need the contributions of these amateur astronomers. Just explain Right. to them. Great. Right. So this is the amateur, a combination of the amateur astronomers who right at this very time providing a background which showed us that, for example, some of these regions are dark red and they are in fact for most of the planet. There is only one red spot. There's there that's not anywhere else. And there are some things occurring on the other parts of the planet that a bit of them are occurring in what we can see from Juno Camp.
Okay, but can you show the Juno cam image again? This is the Juno cam. This is a Image? Juno image. Yeah. It's a series. It's a composite. You can see each of these is put together. Okay. तो Yeah. ये जो हिस्सा है जहाँ पे मैं अपना माउस, सॉरी, shall I translate? Yeah. Yeah. तो ये जो हिस्सा है जहाँ मैं अपना माउस चला रहा हूँ, यहाँ पे ये कई सारी इमेज को स्टिच टुगेदर करके यहाँ बनाया है. यहाँ दिख रहे हैं जहाँ मैं माउस चला रहा हूँ बच्चों, है ना? कई सारे इमेज को, और वो कई सारी इमेज जूनो कैम की इमेज के साथ साथ हमारे जैसों की फोटोज को कंबाइन करके बनाए. ओके, ग्रेट. और उससे Okay. पता लगा कि कहाँ पे लाल है, कहाँ पे कौन सा एटमॉस्फेरिक जोन है, कौन सी गैसेस हैं, वो हम बता सकते हैं. यस. Okay. Now, we can engage citizen scientists with the Juno mission. You can, in this website here, you can upload, using planning, your own Jupiter images, and we'll feature them. We no longer have the discussion or voting page, but you can download JunoCam images, process them, and put them back on the Mission Juno website. Or if you want actually to participate in the scientific analysis, you can jump into what we call the think tank. सुपर. सो देखो ये जो वेबसाइट दिख रही है ना, missionjuno.swri.edu/junocam, जो दिख रहा है ना, इस अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा. आपने अगर खुद जुपिटर की फोटो ले रखी है, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो. ठीक है, प्लानिंग कर सकते हो, यहाँ पे प्लानिंग में अपलोड कर सकते हो, और प्रोसेसिंग भी कर सकते हो. यहाँ पे नीचे लिखा है इमेज प्रोसेसिंग. तो जैसे किसी और ने इमेज करा, अपलोड करी है, लेकिन वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, तो आपके कंप्यूटर पे आप उसको डाउनलोड करके प्रोसेस भी कर सकते हो कि यार इसको थोड़ा सा और अच्छे एंगल से, मान लो कलर इमेज है जिसको आपको ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है, आपको कॉन्ट्रास्ट ज्यादा अच्छे से देखना है उसमें, तो वो आप कर सकते हो. ठीक है. और थिंक टैंक का मतलब है एक टीम जिसमें कई सारे लोग हैं पूरी दुनिया से जो एक इमेज के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं कि यार ये यहाँ पे ऐसा है, ये पहले मैंने पिछले 10 दिनों में देखा था ऑब्जर्वेशन, ये छोटा हो रहा है रेड स्पॉट धीरे धीरे, तो क्या ये वाकई में हो रहा है, क्या बाकी की इमेजेस ऐसा कह रही हैं, और इमेजेस है क्या हमारे पास, और जानकारी और डेटा है, तो ये सारा इस वेबसाइट पे कर सकते हो. ये असली तौर पे सिटीजन साइंस है. समझ में आया? Okay. All right. Here would you, if you wanted to download processed images, you would look at these that are minimally processed by the Juno Mission Campus site and download these. ओके. सो ये इमेज प्रोसेसिंग गैलरी है. देखो साउथ पोल की एक फोटो, कम से कम एमिशन के एंगल पे, फिर पोलर का एक टाइम लैप्स का सीक्वेंस है इस पोल का. ठीक है. सो ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं, अलग अलग उदाहरण हैं जहाँ पे अपन बहुत सारी इमेज को देख के प्रोसेस कर सकते हैं. ये कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे और कोर्स. Okay. And you can just create interesting images, or actually create advanced pieces of artwork, which people have done for the Juno mission. So आप आर्टिस्टिक मतलब अपने क्रिएटिव भी हो सकते हो कि यार मैं रचनात्मक ढंग से इसको प्रस्तुत करना चाहता हूं, तो अपने ही कलर का आपने ये क्या किया, ये देखो ये दिख रहा है, इसमें कौन कौन से रंग है, ये सारे रंगों को अभी आप साथ में मिला के, जैसे कि वैज्ञानिक तौर पे मत सोचो, एक चित्रकार की तरह सोचो, एक अद्भुत चित्र बना के मेरे को अपलोड करना है, वो भी कर सकते हो. आपको बताना होगा कि ये मेरी बस क्रिएटिविटी है, मेरी केवल मैं रचनात्मक काबिलियत का इस्तेमाल कर रहा हूं. लेकिन ये वैसे आपका मतलब मौका है कि आप केवल वैज्ञानिक तौर पे ही नहीं, आप एज एन आर्टिस्ट भी इसमें भाग ले सकते हो. समझ रहे? Okay. So the Juno mission wants you image Jupiter, process our images, or analyze our images. Just go to this Great. website. तो हमें इनको सिटीजन साइंस के डेटा की जानकारी की जरूरत है,
ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग और इमेजेस लें जिससे और नई नई जानकारी रहस्य खुल जाए। मान लो आप में से कोई एलियन लाइफ की खोज कर ले जुपिटर में, कर सकते हो? हाँ। So just a small example I gave. You can even, find alien life there. Why not try? Okay. And this Yeah. was my final slide, except for my crazy week. Lots of observations. It's just a picture of my very busy observing life from the IRTF. November 23rd and 24th, the last 2 days, I observed Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. And these are 2 examples of the screenshots of our images from last night. No processing. Okay. तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने 23 नवंबर को सुबह देखो 4:30 से 10:30 तक नासा के टाइम, मतलब यूटीसी टाइम पे इन्होंने ये सारे ग्रहों को ऑब्जर्व करा। ठीक है, 24 नवंबर को वापस से उसी समय पे, ये पिछले 2 दिन का है। अभी वहां पे 24 नवंबर की रात हो रही है जहां से वो बात कर रहे हैं। ठीक है, वो अभी अमेरिका से बात कर रहे हैं। तो 24 नवंबर को वापस से इन्होंने ये 6 घंटे वापस से ऑब्जर्वेशन करा। मतलब रोज 6 घंटे की ऑब्जर्वेशन इन्हें करनी पड़ती। ठीक है, और ये उसके बस स्नैपशॉट है, ये प्रोसेस्ड इमेजेस नहीं है, बस स्नैपशॉट है। जब इन्होंने जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट देखा था उसकी, तो ये अलग वेवलेंथ में है। ये 3.8 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ में है और ये 5.1 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ में है जो उसकी हीट देख रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। एंड ये दीज आर अर्थ बेस्ड स्टेशंस, राइट? फ्रॉम Yes, this is RTF. You did not apply to Juno to do this. It's okay. No, Juno, these were taken, Juno, a day and a half before this, flew right around this region. So we were there to support Juno, to provide all that context. So ये यहीं पे ऑब्जर्वेटरी में इन्होंने लिया है। ठीक है, यहीं की ऑब्जर्वेटरी में लिया है। नासा IRTF जो सबसे पहले अपन को टेलीस्कोप दिखाया था जहां पे गए थे, देखा था। Did you show us this telescope in the earlier slides? Yes, it's the one with the picture of Hawaii that had Subaru CAC telescopes and the IRTF. हाँ, जो कई सारे टेलीस्कोप दिखाते हैं ना, कैक टेलीस्कोप भी था, उसमें था। तो ये उस टेलीस्कोप से इन्होंने इमेज ली है। Where are you right now? Right, physically now I'm at home in No, California. at home in California. So okay, Pasadena? With my house in the background. No, the location Pasadena? Yes, well, next door. Okay. तो अभी ये कैलिफोर्निया में बात कर रहे हैं, पैसेडिना से उसके पास है ये ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे जाते हैं। Okay, yeah. Okay, and I give this talk today, tomorrow, and Saturday, and Sunday, or Sunday and Monday, I will be observing from Palomar if the weather gets better to use Uranus and Neptune. Then Monday, I have a short time on the IRTF to observe Neptune. Then I'm back on Palomar on the 29th and 30th to look at changes in Uranus and Neptune and possibly the atmosphere of Titan, which is the largest moon of Saturn. Yeah. तो देखो पूरा इनका शेड्यूल 30 नवंबर तक का। पैलोमार 5 मीटर का जो टेलीस्कोप है उससे उन्हें यूरेनस, नेपट्यून और टाइटन को देखना है। टाइटन बताया था क्या है, किसका चांद है, किसका सैटेलाइट है, बृहस्पति की या शनि की? वेरी गुड, शनि की, वेरी गुड। तो शनि की सैटेलाइट टाइटन जो सबसे बड़ी है उसको देखेंगे और पूरे हफ्ते इनको बस ऑब्जर्वेशन ही ऑब्जर्वेशन करना है। ये काम होता है, ये क्या बदल रहा है पूरे हफ्ते। बहुत अच्छा काम भी है ना? ओके, या सो Yes. टेल मी, Well, tell us. 2.5 years ago, I applied for time on James Webb Space Telescope, which is very hard to get. And finally, I was awarded time, and I just got this message. The following visits of James Webb
dynamics and temporal variability of the atmosphere of Neptune have been scheduled on November 30th to December 1st of this coming week. So that's a lot of observing in the last week, which I didn't expect originally. Wow. तो Yeah. जेम्स वेब टेलीस्कोप जो सबसे लेटेस्ट टेलीस्कोप जो पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा है, नाम सुना है? नहीं सुना? अच्छा, हबल सुना? वैसे ही जेम्स वेब टेलीस्कोप लास्ट ईयर भेजा था, जो अभी इन्होंने स्लाइड में प्रेजेंटेशन की थी, जो बहुत बड़ा टेलीस्कोप है। इसका ये टेलीस्कोप है, ये जो ऊपर दिख रहा है, ठीक है? तो उसमें ये आधुनिकता का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, आधुनिक युग का, जो पृथ्वी के बाहर भेजा। तो बहुत नई नई खोजें कर रहा है रोज। तो उसको ऑब्जर्व करेंगे ये 30 नवंबर को। ये समय दिख रहे हैं, 30 नवंबर को दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक, फिर शाम को 5:45 से 7:15 बजे तक, दोपहर में 2:30 बजे से फिर 3 बजे तक, और रात को 11:30 से अगले दिन के रात के 1 बजे तक। ये पूरी ऑब्जर्वेशन के इंचार्ज इस दिन ये हमारे डॉक्टर ग्लेन ऑर्टन। तो उस समय अगर कोई खो जाए तो हमें पता लगेगा कि किसने खोजा है, किन्होंने खोजा है। Very good. So we have also just said that if we get a news of a discovery during that time, then it's credit to Dr. Glenn Orton. On November 30th, we'll be waiting. We'll see. Okay. Thank you very much. That was the last slide. Thank you so much. I'll leave it on the Juno mission once you, or I can go back to the slide of the telescopes. Yeah. So we are going to take questions now. But I would like for the offline Vatsalya Space Observatory room to get to ask the questions first, and then we will go to the questions in the chat, because we have certain trainers and more space enthusiasts and prospective students for next batch also with us in this session. Although not, okay. Yeah. So सबसे पहले जो रूम में है, कोई भी सवाल किसी भी चीज से संबंधित आराम से पूछो, मैं आप लोगों का ट्रांसलेशन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हम कैमरा के आगे आके पूछेंगे आराम से। बताओ क्या पूछोगे? इस से संबंधित। I've already sent you the questions in chat box. Yeah. Yes. Just a second. Let me check who is. Just a second. Yeah. I would request other participants to please mute themselves right now. You'll get the chance. We'll address the questions in the chat also. I'm just seeing the chat now. So. Okay, so we're going ahead with the offline questions. Aajao. This should I read this story? The bright patch on Saturn in the black and white photograph is hot. It's in the black and white photos. The bright regions are clear, and they're letting us see down to warmer areas. Okay. So you can decide on which color you want to color the planets with. I didn't hear that very well. Dory, can you? Unless you heard that better than I did. Yeah. Hello. Can you hear me properly now? I can hear you. I can hear you, but I can't always tell what the words are. Dory, can you just wait for 2 minutes? Just wait. Okay. I request all the online participants to mute themselves. Yeah. Glenn sir, you can stop the screen sharing. We'd like to see the camera. Just a second. Okay. Stop the screen. I'm gonna find it. Let me try. That's fine. Chat. We're out of chat. I don't want to be in chat. Can you stop the sharing?
Yeah, maybe just a second. Actually, our Ah, there we go. yeah. Okay, it was very tiny. Yeah. Hello. Okay. Hello. So yeah, you can hear me, right? Clearly. Really, it's a very big echo. Can you hear me clearly? Yes or no? Barely. Try it. But speak slowly and loud. Just a second. We'll switch microphones. I think there is a problem with the microphone. Oh, Just a okay. second. Hey, Yeah. Can you hear me now? I can hear you. Yes. Yeah. Okay. So आप हिंदी में पूछ लो. We have a question. वो बीच में ग्रीन ग्रीन आ रहा था ना. हाँ, क्या होता है वो? So the You question do. is, in between, we saw Jupiter as green in the video. There were also, why is it appearing green? Those colors are arbitrary. They're made so that you can see different things. Jupiter itself can be a very different color, and those colors are made arbitrarily. Does that make any sense to you? The colors are chosen to be sort of like Jupiter, but they're very stretched. Okay. So वो actually में exactly green नहीं है. उसमें colors की जैसे बोला था ना composite image, ताकि हम contrast देख सकें अलग अलग अच्छे से. तो colors को stretch करा गया है. समझ गया? Next question कोई भी. यहाँ से पूछो. बैठ के. हिंदी में पूछो आराम से. जो बृहस्पति ग्रह के पास हम देख रहे थे, साउंड किसके थे? Okay. So the question is, during the video, there were several interruptions and the sounds. Was that a video error, or did it have to do anything with the like magnetic interference and all those of Jupiter? No, not at all. Okay. It's just composing the video. Okay. Okay. And from So- different, you are composing from different images, and when you transition from one image to another, it doesn't always perfectly match. ओके ओके. सो वो कई सारी फोटो को एक साथ कंपोजिट में डाला था ना, इसलिए वो ऐसी एरर आ रहे थे. वो वीडियो का एरर है, वो और किसी चीज का प्रभाव नहीं है. ठीक है. बैठ के कैमरा के साथ, कैमरा में देख सकती है. इधर Yeah, good. I can almost, I see your ear. सर बृहस्पति तो गैसीय प्लेनेट है, तो उस पे धरती पे वो तूफान कैसे आते हैं? धरती पे आते हैं तूफान तो. So the question is, if there is no surface on Jupiter, Correct. how I mean, he says I can picturize storms on Earth. I've seen storms on Earth, but without a surface, where does the storm go? It's kind of a vague question. How does it form? It's a very, tell him first, it's a very, very good question. Okay. It depends on the feature. Some storms go not much more than 1,000 kilometers below the 1 bar level, the cloud tops that we see, and some seem to go much further. Okay. So big features go down as far as we can see for the microwave radiometer, and others stop. The bigger ones go deeper. But Okay. that's a good question, because it's what we sent Jupiter there for with the microwave instrument. Okay, that's a very good question. मतलब है कि हालांकि सतह नहीं है, लेकिन जो स्टॉर्म्स होते हैं, जो तूफान होते हैं, जो बड़े वाले होते हैं, वो तो लगभग 1000 किलोमीटर से भी नीचे चले जाते हैं. 1000 किलोमीटर नीचे, मतलब ऊपर वाले सतह से 1000 किलोमीटर नीचे. छोटे वाले 1000 किलोमीटर के ऊपर ऊपर रहते हैं. लेकिन क्या सतह है या नहीं, अभी तक तो हमें मिली नहीं है, या है या नहीं, इसका भी अभी जवाब है नहीं हमारे पास, है ना.
हो सकती है क्या आपके हिसाब से? पूछना है किसी को? बताओ कौन पूछना चाहता है? आ जाओ, वैसे रिपीट नहीं, कोई और फटाक से। उत्तम पूछ। क्या वो हो सकती है क्या? आराम से पूछ। क्या? जुपिटर पे हो सकती है। पृथ्वी पे जो सतह है वो जुपिटर पे हो सकती है क्या? So, is it possible that there is a surface on Jupiter and we have not found it yet? We don't think so. We thought originally, and again, that's a good question. There is a core, like the Earth has a core that's very solid, has a very distinct surface. Jupiter has a core, very heavy metals, heavy materials, but it seems to be fuzzy. ओके ओके। सो जैसे कि हमारा पृथ्वी का कोर तो एकदम डिफाइन है, जैसे कि क्रस्ट है, मेंटल है। जैसे कि एक उबला हुआ अंडा देखो तो सबसे ऊपर वाला जो क्या होता है, छिलका, वो क्रस्ट है जिसपे अपन लोग हैं। फिर मेंटल है, व्हाइट वाला हिस्सा, और फिर कोर है। तो डिफाइन होते हैं वो एकदम। वहां पे जुपिटर में डिफाइन नहीं है एकदम, एकदम कोई गोल सीधी सीमा नहीं मिली है इन्हें अभी तक, तो उन्हें लगता नहीं है कि कोई सतह है बृहस्पति पे। ओके, पूछो। We'll take 2 more questions from the room and then we'll switch to online. बताओ, उधर से किसी ने नहीं पूछा? हाँ पूछो पूछो, यहाँ बैठ के पूछना कैमरा के सामने। हाँ हाँ, वहाँ बैठ जाओ, आराम से पूछो। जैसे कि जो मून है, थोड़ा इधर आ जाओ। जैसे That's हम fine. कोई भी वो भेज दिया कैमरा, उसके चारों तरफ घूमता है। बोलो, इसे पूछो सीधा। चलो चलो पूछो। जैसे हम कोई भी भेजते हैं, इसके पास में ये से बोल रही हो ना सर। हाँ, तो वो क्या करता है कि उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो अभी आपने जो बोला कि जैसे वो है उसके बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो फिक्स दूरी पे चक्कर लगाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार पास जा रहा है, दूर जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? जो उसके चंद्रमा है वो, या फिर हमारा जो हमने भेजा है वो, ये होता है ना उसका जो ऑर्बिट होता है, उसमें वो फिक्स उसी में चक्कर लगाता है, उसके बाहर नहीं जाता। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार उसके पास जा रहा है फिर दूर जा रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। So this question is about the orbit of Juno cam. Basically Juno. Yeah. Yeah. The orbit is way more skewed than orbits in general are. Yep. So how do we manage it? How do we manage it? And what are the forcings acting on the orbit which makes it stable despite being so despite the focal point of the ellipse being so one-sided, lopsided? That's the No. question. That's actually, the orbit itself is very stable. And in fact, we got into that orbit just by, on our approach, firing a retro rocket at just the right way, at just the right amount, at just the right time to leave it in that orbit. That orbit is very stable. If we waited a faster orbit and not quite so extended out, then we would spend more time very close to the planet and suffer much more radiation damage. Originally, we were not supposed to last past perigove 9, but now we're at perigove 56. The orbit will change in 2 ways. Well, I'll let you translate that first. Yeah. तो एक्चुअली क्या है कि देखो, एक स्टेबल ऑर्बिट रहती तो ज्यादा पास रहता और वो चुंबकीय बल से उसका चार्ज पार्टिकल और चुंबकीय बल दोनों से खराब हो जाता जल्दी। तो वो हमें करना नहीं था। हमें ये करना था कि ज्यादातर समय वो दूर रहे और बस पास आए और फटाक से फोटो ले ले। ऐसा अचीव करने के लिए जब वो उसके पास आए तो हमें ऊर्जा ज्यादा चाहिए ताकि वो जल्दी से उसके पास से निकल जाए, ना कि उसके अंदर गिर जाए। समझ रहे हो? तो उसके पास जाता है तो एकदम सही समय पे वो रॉकेट फायर करता है, रेट्रो रॉकेट्स, डायरेक्शन के रॉकेट्स। मतलब थोड़ा सा एंगल यूं करके रॉकेट फिर छोड़ता है, फिर स्पीड बढ़ाता है, फिर बढ़ाता है, और जब पास गिरने वाला होता है तो उससे बचने के लिए दूसरे दिशा में रॉकेट फायर करता है। मतलब जैसे यहाँ पे रॉकेट ऊपर भेजना होता है तो नीचे उसकी एनर्जी जाती है ना, तो फिर वो ऊपर जाता है।
तो वैसे ही जुपिटर की तरफ करके, थोड़ा सा जुपिटर से दूर करके, एंगल बदल बदल के सही समय पे रॉकेट फायर करता है, जिससे वो उस ऑर्बिट में स्टेबल रह पाए। ठीक है। Two things will change in the orbit. One is that tidal forces will move the perigeo further and further north. And the other is simply while the orbit stays stable in inertial space, Jupiter is rotating around the sun, revolving around the sun. And so our view currently of the perigeo is in darkness. We're on the dark side of Jupiter, not the very bright side. And so that will just depend on what part of Jupiter's 12-year orbit that we're in. So इसमें और भी कई चीजें फर्क पड़ती हैं। मान लो अगर कोई पृथ्वी वाला ऑब्जर्वर है, तो आपको पता है कि अगर जुपिटर दिन में राइज होगा तो आप देख नहीं पाओगे ना। तो अभी ऐसा है कि सूरज एक जगह है, जुपिटर अर्थ के पीछे है एक तरीके से। तो जब अर्थ की रात होती है तो हम जुपिटर को देख पाते हैं, लेकिन अर्थ की ऑर्बिट ज्यादा तेज है, तो जब सूरज उसके बीच में आ जाएगा, तो जब हमारे लिए दिन होगा, जब पृथ्वी घूमेगी, तब जुपिटर उस सूरज के भी पीछे होगा, मतलब एकदम पीछे नहीं, पर सूरज के आसपास होगा, दिन में होगा, तो हम देख नहीं पाएंगे उसको। तो उससे भी फर्क पड़ता है, तब जूनो कैम का रोल भी बढ़ जाएगा। ठीक है। या yes, I think any further, we have just one last question from the room and then we'll switch to the online participants and the chat. So last question, बता दो। कैमरा क्या आ गया, कैमरा क्या आ गया। मनुष्य का जन्म पृथ्वी ग्रह पर ही क्यों हुआ और दूसरे ग्रह पर क्यों नहीं हुआ? So the question is about it's not only like Earth gave rise to, I mean, life in a way, right? There was life on Earth. Yes. But there are other planets also close to the habitable zone. Why isn't there any life there? So I know this is not so related to the Juno mission, but the answer is we don't know yet. We would like to explore life in the ocean of Europa, which is one of the major satellites of Jupiter, and in Titan, and in one of the big moons of Saturn, Enceladus, which has a very thick ocean. So that's a good question, and the answer is we don't know yet. We want to find out. So build a spacecraft. Build a spacecraft that will let us give the answer. Okay. तो इसका जवाब ये है कि अभी हमें नहीं पता कि क्यों हुआ या है भी या नहीं। यूरोपा जो जुपिटर का मून है, उसके अंदर हो सकता है, जहां तापमान ठीक हो, क्या पता कि वहां पे जीव जंतु हैं। वैसे ही टाइटन के लिए भी हो सकता है कि है या नहीं है, हमें अभी भी पता नहीं। तो वो बोल रहे हैं आदर्श को कि एक यान बनाओ जिससे कि खुद जाके आप देख सको वहां पे। ठीक है। या ओके, बनाओगे? या सो ही विल मेक अ स्पेस शटल। Yes. Right. Okay. So now let's switch to the online questions. I will moderate this. So please, guys, I'll request your patience. यहाँ पे room, I would like to be quiet just a second. The online people can turn on their cameras and So first we go to the chat. So okay, first question was the bright patch on Saturn in the black and white photograph is hot. This was a question by Dory. Right. I saw that. For the black and white photos, when we had the F5 microns, we're sensing the same way we would at Jupiter. Places that looked hot were in fact hot, but because we could see it deeper in the atmosphere. So for Saturn, if they're hot, again, it's less of being hot than letting us. It's a clear region that sees down to a deeper and warmer region of the planet. Okay. Yeah. So I hope that answers your question, Dory. Then we have a question by Suryansh. Do you think that hot Jupiters possess the same properties if looking in a
particular wavelength as of our own. According to current research, they have a orbit close to their host. Then why won't the gas escape like jets from the planets? So, Suryansh, would you like to further clarify what you mean to ask by this, or do you get the question? Sort of, and the answer is mixed. I think we get hot Jupiters that have very different processes because a lot of the lighter elements are being blown away. Water becomes more abundant in a place where we can see things, as opposed to Jupiter, where it's kind of buried down. It condenses out at the 10 bar level, and so we see all the storms that we see are, think of it as the weather layer in Jupiter being at 10 bars or up to the 1 bar level where we see things. In a hot Jupiter, every water is up way high. It's a primary source of absorption. And in there, we see some evidence of weather. In fact, hemispherical changes, but there are a lot of people developing weather pattern models, global climate models for hot Jupiters that show weather patterns taking place. Using hot Jupiters, and this is the key thing, nothing is perfectly round, so these are tidally locked to their major primary. And so there's a huge amount of question as to whether all of the heat on the primary star facing side is being moved up and escapes all the way to the back of the planet where it's colder. And so we don't, that's an open question that I saw at a meeting very, very recently. And the answer is there's some evidence showing that some other process takes place. So the weather is, the general meteorology is the same, but the processes are different just because of the heat and the tidal lockness of the planet, which I had to think about first, and that made sense finally. Mercury is tidally locked, but in a 3-to-2 resonance. So we'll keep looking. So, like I was saying, can I ask, Karthika sir? It's okay. Yeah. Yeah, go So ahead, I was Suryansh. saying that they are much closer to their host stars. So instead of Yes. using a Doppler shift spectroscopies, then why can't we just look for jets? Because there might be some elements that can evaporate in the atmosphere, solar atmosphere. So because of the host stars, the heat that is generated from the host stars, and hot Jupiters are because of their mass and the size, the researchers shows that they are much closer to the host stars. Like they are not in a habitable zone. So why can't we just spot jets and we can identify that yes, these can be hot Jupiters or hot Saturns? I didn't get the very last question again. Why can't we? I was saying that instead of using Doppler shift, we can even find a method of identifying jets. Like some elements might be there in the atmosphere that can evaporate from the surface. Right. We don't, for that kind of compositional information and for temperature changes, we're not using Doppler shifts. We're actually looking Doppler at shift is just for we're looking at, observation. Like there is some transit. We're looking at transit. So yeah. And so we look at the difference between the star when the planet is in front versus when it's not in front of the star. We use spectroscopy then to understand what's taking place in the atmosphere. The difficulty with that is it's difficult. The star itself has star spots on it that aren't perfectly the same. So what we see changing isn't always the planet. It's sometimes the activity, they call it, for the star itself. But that's the best way to look at things. And that's something James Webb is really focusing on a lot of attention. You can finally have the sensitivity to see tiny changes in the star, in the planet in front of the star. Okay. Yeah, thank you. Okay. So we the next question, Glenn sir, I hope you have 15 minutes with us more, right? Sure. Okay. Well, they don't have to use the bathroom yet. That's yeah. So the next question is the video you showed us. That's how close the satellite goes to Jupiter. For how long can it make the observations during that period? And is Juno a nickname for Jupiter or the name of the satellite? Name of a satellite. Okay. Oh, 3 questions there. Yeah. Which one? The satellite will go between, I think, 3,500 and 6,000 kilometers above the cloud tops.
really close. It stays there for about 1.5 to 2 hours, and that's it. We don't want to stay that long because of radiation. And again, the reason for that big long orbit is you spend a tiny amount of time in that very close area on Jupiter. And the background story is that we ended up we didn't want to be in that orbit. We wanted to be in a much shorter orbit, but the Russian rockets had a problem. And so we decided not just to stay in the 53-day orbit, which made the mission more expensive from NASA's point of view, but it let us last much, much, much longer than we might have otherwise. Juno is a name. It's not a nickname. It's the real name. It is not an acronym. It is a part of mythology of the Roman goddess Juno, who is watching her husband being naughty and seeing him doing what he's doing with a big cloud around him. But Juno has piercing vision and sees through the clouds to detect his infidelity. So Juno, with a microwave, is seeing right through all the clouds into the depths that Jupiter is hiding from us. It's a little. Some people are not comfortable with that, but it is what it is. It's classical, so we can use this. So I'll just take a way of looking piercing through the clouds of the planet. Yeah, I'll just take a minute to translate this to Hindi because the children will love it. Yeah. Well, ask their parents about certain things. So Juno mission है ना, रोमन गॉडेस का नाम है जूनो, जो ग्रीक मिथोलॉजी में क्या कर रहे थे कि उनके पति देव है ना, मान लो दूसरी महिला के साथ शरारत करे और उनकी तेज गति से, सुपरमैन दीवार के पार देख सकता है ना, तो बादलों के पार उन्होंने देख लिया और दूर से पकड़ लिया अपने पति, ठीक है। तो फिर उसके बाद बैंड बजा दी, वो बात अलग है। लेकिन जूनो मिशन इस ग्रीक गॉडेस पे आया क्योंकि हम जुपिटर के क्लाउड के थ्रू देख रहे हैं, इसलिए नाम आया। एक्सेलेंट क्वेश्चन दोरी। या ओके, so the next question, I think we have already covered hot Jupiter, so I'll just skip to the next part. What is the significance of red dot on Jupiter? This is by Rahi. What? Yeah. Big. Yeah, and also the question. second part of the question is there any chance of a multiverse happening? So very different questions. Yeah. But yeah. The second question I'll answer first. I have no idea. I don't know. The red spot is a real enigmatic thing. It gets everyone's attention. I don't have it in my hand, but there was someone who had the little playing ball with rings around it. If you name it, you can bounce it off of your heel, bounce in the air, and it looked undistinguishable until someone moved it around and realized that there was a red oval in the middle of it. And we realized, oh no, that it's a model of Jupiter. So the red spot defines Jupiter more than anything else. It's been around for a while, at least a century and a half. It is composed of very high altitude particles. It is cold, and so it's a region of upwelling. What makes it red is a really open question now. Two theories is one that it's high enough and you have ultraviolet radiation changing sulfuric dioxide into something that's just particles of sulfur, S2 or S3, which are reddish brown. Another is that laboratory work has showed us that when you bring up ammonia, which is like water in the Earth's atmosphere, ammonia is the uppermost condensate. The white clouds you see are probably nucleation sites for ammonia, NH3. And when that becomes in contact with something in the stratosphere, which is acetylene, C2H2, a reaction occurs, and we get this condensate that's reddish brown. And so things turn red, and the red spot often gets changed in color depending on how high things are buoyed up from below and how long they stay there. So inevitably, it depends on how much ultraviolet radiation comes in, which is the high energy part of visible light. And it's still an open question. We need another probe to go through the hotspot.
to the red spot, instead of the Galileo probe actually went through a 5-micron hotspot. So it saw minimum clouds. And that was one major part of one of my research points that NASA gave me an award for. I showed them that the Galileo probe went into a hotspot at Jupiter, which had very little clouds compared with anything else. But open question, lots of open questions. Wow. Well, so that also brings us to the last part of the talk, which is the open forum. So more questions, anybody, if anybody has in the room, we'll take the room first. I saw your hand, Suryansh, so we'll go to you. But anybody else, any open question, we'll take only 4 more questions. Okay, only 4 more questions. 4 और सवाल पूछेंगे, कोई भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पूछना है तो इन जनरल है, उनके बारे में कुछ पूछना है? Okay. So one question is, how do we define the poles of planets if they are if they're quite spherical? So I think I know the answer, but I would like to hear from you. Well, we define poles by rotation, not by whether they're spherical or not. Right. Jupiter makes that very easy because it's spinning so fast every 10 hours, and it's so big, 70,000 kilometers at the equator. You would, if you're on the equator, you would do very good at the Olympics on the high jump. Then you're at the poles, because you have a 10% advantage of being up. So Jupiter is bowed out like this, but in fact, we just watch things rotate around the pole of the planet through the clouds the cloud motions we see are enough to understand what's going on. Interestingly, deeper in the atmosphere, things rotate at a slightly different rate. So we can tell that by the magnetic field, which changes. Anyway, you have a lot to translate. Yeah, just a second. तो पोल्स का निर्धारण उसके रोटेशन से होता है. उसका तो अक्ष तो एक ही रहेगा ना, चाहे गोल हो तो यूं घूम रहा है तो इधर और इधर पोल हो जाएगा. समझ रहे हो? जैसे कि अरुण के केस में अगर आप पूछना चाहते हो, मेरे हिसाब से अरुण के बारे में पूछना चाहते हो क्योंकि वो टेढ़ा है तो उसके पोल गर्म है और साइड ठंडी है. So it gives rise to another follow-up question for Uranus. It's yeah. So are the poles hot or cold? I mean, in comparison to the planet. One will be warmer and one will be colder. Yeah, all of the above. I think it's basic, but radiation that warms or cools things is very long. The time scale is very long compared with even the orbit, which is very, very long. And so sometimes that's not as much of a driver of changes as we might think. People are working on global climate models for Uranus and Neptune. Okay. Any more questions from the room? Only one question more from the room. And we have to respect the time of such a senior scientist who has given us so much time. Anyone? हाँ बोलो. Very senior. Okay, so there's a follow-up question to the previous one. If in case there is a new planet discovered and it doesn't rotate at all, is it possible even if it's tidally locked, or? We have not found anything yet that's not rotating, just because everything is formed in a very rotating nebula. So that angular momentum, you explained that one, is given to every object. So if we ever find something that's not rotating, it's because that its rotation has been counteracted by some oddball collision that's pushing a momentum in the opposite direction. But I think that's unlikely. Okay. अभी तक कोई ऐसा प्लैनेट मिला नहीं है जो रोटेट नहीं करता हो आज तक, तो एंगुलर मोमेंटम बता देते हैं बाकी. Anyway, so we'll first take the question from Suryansh and then the final question from Rahi. So Suryansh, unmute your mic and tell me. Yeah.
So, sir, I'm like currently working on radio telescopes, working in K-band for K-band astronomy. So, Okay. my question is that won't it be better to send radio telescopes like to space instead of sending space probes for like multi-band radio telescopes to orbit of planets like Jupiter, Saturn, Uranus, and all, instead of sending probes that can observe in a particular wavelength, like IR or visible. So, yeah. The radio, it will depend. The radio telescope must be, let's see, remind me what wavelength is the K-band? K-band is from 18 to 27, like gigahertz. Okay. I can't do this. Divide into speed of light. I tend to think in wavelength space instead of Yeah. gigahertz. Yeah. It depends where you're looking, and that part of the atmosphere for Jupiter, for example, and largely for the other planets, we first for Jupiter have to get through synchrotron radiation, which prevents us from seeing very far down. It just reflects things back off. The energy that's going on or the energy that's coming in cold space. Sometimes we see from Juno, the microradiometer sees an area that's cold because it's reflecting cold space back to us. Another part is we want in the infrared to see things that are dominated by an opacity from a constituent that's uniformly distributed in the atmosphere. Like in the Earth, we use CO2 or oxygen. So we know when we see a change in the brightness temperature, we know it's a change in the kinetic temperature of the planet. In the microwave, we don't see that. It's mostly dominated by ammonia rather than hydrogen. For the mid-infrared, the far infrared, the opacity is hydrogen for the outer planets. And it's a great place to know that what we're seeing is exactly due to a temperature change. And that's going to govern the dynamics. But the benefit of the longer wavelengths is you would see deeper in the atmosphere. So what I suggest is sending both a mid-infrared instrument and a microwave and radio instrument on the same thing. You do need a direct probe in the atmosphere because you want to see some things that are very important, which is the abundance of noble gases, helium, neon, xenon, which have no optical attributes at all. Thank you. Sure. We've been thinking about that one for a while for Uranus, which is next on the list of places to observe for NASA. We're hoping to get to the next 10 years for launch, but maybe not in my lifetime. I'm 75, so we'll see what happens. You will definitely know. Yes. Next question. So the final question from Rahi. Rahi, where are you? Rahi, you can unmute yourself. Namaste sir, this is Rahi. And my question is that I have read somewhere that after a few years the ISS will retire. So when it will retire and what is the time when it will be retired? Did you understand that? No, I didn't get that. Can you write it down? Can you write it down in the chat, Rahi? Yeah. That would be better. Thank you. Just he's writing it down in the chat. This is the final question. I want to just say, because the last few questions were in English, I want to convey to my wonderful citizen scientists there. Okay. Don't worry, we have recorded this session and I will sit and translate it all with you. Okay, the last 15 minutes. Don't worry. Okay. Yeah. So I think Rahi is almost done typing. Well, it's fine. This was a wonderful session, sir. So just that's a waste. Yeah. Okay. So he's asking, I have read somewhere that ISS will retire. When will it retire? Oh, that one I don't know at all. It may be retired at some point, but there are no immediate plans to do that. People keep getting sent up to, part of it is replenishable.
and we keep sending things up that we can fix things. So I don't know of any immediate plans to retire International Space Station, but eventually everything runs out. Everything has a lifetime, including me or everyone else here. And so we keep working as much as we can. I don't know of an estimate an engineer would have to answer that question. Wonderful, wonderful. And I'm not retired yet. I'm still working full time. I never drive into work. Yeah. So, I drive into play. Yeah, yeah, wonderful. Well, thank you very much, sir. Glenn, sir, this has been such a wonderful session. A huge round of applause, I guess, is called for. So definitely, please, my children here. Oh, hello. You're welcome. Very much my pleasure. So today actually accidentally happens to be voting day in Rajasthan for the state elections. So it was a last minute declared holiday. So the turn up could have been about 20-25% more, because 20-25% of our candidates are 18 and above. So they had to go and vote. But anyway, yeah. So thank you very much. I would like to thank you on behalf of Vatsalya and on behalf of our CEO, Dr. Hitesh, who tried but is not able to join yet because of all this polling and everything. So thank you very much, Glenn, sir. Your wonderful, wonderful, wonderful session, and coming directly from you, hearing directly from you, the children are definitely left inspired, and I'm going to face about 100 questions before I exit the science center gate. That I know. But that drive, that igniting that drive is the main mission here. So, so thank you so much for this wonderful talk, Glenn, sir. And we hope you'll be in continuous touch with us, and we'll keep you updated. We'll keep you updated for how the program is going and whatever we are up to next. And I'll try to take up my Celestron 8 instead of getting time on 8-meter telescopes. I can't do both at the same time. Okay. And everybody wants to invite you to India, and we'll be more than happy to host you here at our campus. Okay. We are a bottle 3 zone 3. So it's still pretty dark. It's very nice. Fortunately, Jupiter is very bright. So yeah. Good. All right. Thank you. Thank you, everyone. I appreciate all of your questions and your time. All right. Thanks. Thank you. Awesome. All right. I'll close the session now. Thank you. All right. Good. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye.